Good morning, students. I hope you all are doing good. Today we will learn lesson number 10 from your GK book, Riddles. The name of the lesson is Riddles. So, what are riddles, students? Riddles are difficult questions that you can ask people for fun. Okay, what are riddles? Riddles are difficult questions that you ask people for fun and that as a clever or amusing answer. Riddles क्या होते हैं? एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों से पूछते हैं फन के लिए, है ना, और जिनका आंसर बहुत फनी होती है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज रिडल. हिंदी में हम रिडल को पहेली भी कहते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू बीज हम? ओके, व्हाई डू बीज? बीज मीन्स हनी बीज. व्हाई डू दे hum? Why do the bees hum? Because they don't know words. Because they don't know words. So they hum. है ना, उन्हें अक्षर नहीं आती है इसलिए वो हम करते हैं. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू ओशंस से हेलो टू ईच अदर? ओशंस एक दूसरे को हेलो कैसे बोलते हैं? दे वेव. है ना, समुद्र में लहरें उठती है ना, लहरें को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेव. ओके, और वेव का दूसरा मीनिंग है हाई बोलना या हेलो बोलना. सो हाउ डू ओशन से हेलो टू ईच अदर? दे वेव. ओके, थर्ड क्वेश्चन, आई हैव विंग्स एंड आई हैव अ टेल. अक्रॉस द स्काई इज वेयर आई सेल. येट आई हैव नो आईज, ईयर्स और माउथ, and I bob randomly from north to south. What am I? I have wings and I have a tail. Okay, I can fly in the sky, but I have no eyes, ears or mouth. Who am I? Kite. Okay, a kite has wings, a kite has a tail, but it has no eyes, ears or mouth, and it bobs randomly from north to south. So what is the answer? Kite. Answer is kite. Fourth one. What kind of tree you can carry in your hand? आप आपके हाथ में कौन से ट्री को कैरी कर सकते हैं? पाम. ओके, पाम, PALM, पाम. है ना, हम अपने हथेली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पाम. और पाम ट्री भी एक ट्री का नेम है. सो व्हाट काइंड ऑफ ट्री यू कैन कैरी इन योर हैंड? पाम ट्री. ओके, now, using only addition, how do you add 8 8s and get the number 1000? है ना, 8 नंबर को हम 8 times 8 8s को हम कितने बार ऐड करेंगे कि हमें उसका टोटल कितना मिलेगा? 1000. कैसे ऐड करेंगे? सी स्टूडेंट्स, लाइक दिस, 1 2 3. ओके, हमें 8 8s को ऐड करने हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. और हम ये ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या आ रहा है? 1000. ओके, सो दिस इज द आंसर. द नेक्स्ट वन, what word begins and ends with an E but only as one letter? ऐसा कौन सा वर्ड है जो ई से स्टार्ट होता है और ई से भी एंड होता है मगर उसमें एक ही लेटर होता है? व्हाट इज दैट वर्ड? envelope. द आंसर इज envelope. सी, द वर्ड बिगिंस विथ ई, ENVELOPE. सो द वर्ड बिगिंस विथ ई एंड एंड्स विथ ई. और envelope के अंदर क्या होता है? लेटर. ओके ओके, द नेक्स्ट वन, I can jump and I can climb. With my many legs, I swing from tree to tree. I can build a house much bigger than me. What am I? Answer is spider. Okay, spider can jump, the spider can climb, and the spider has many legs. Okay, and the spider swings from tree to tree and it can build a house much bigger than the spider. Okay, so the answer is spider. Eighth one, what kind of music
do rabbits like? Rabbits को कौन से music पसंद है? Hip hop. Which music the rabbits like? Answer is hip hop because rabbits hop करते हैं ना, jump करते हैं. So what kind of music do rabbits like? Hip hop. Okay? Yes. Now ninth one. What has teeth but cannot eat? किसके पास teeth है मगर वो खा नहीं सकते हैं? Answer is comb. Okay? कंगी है ना? Comb. C-O-M-B. Comb. Comb as teeth but it cannot eat. Okay? Now the last one. A monkey, a squirrel and a bird are racing to the top of a coconut tree. A monkey, a squirrel and a bird are racing to the top of a coconut tree. Who will get the banana first? The monkey, the squirrel or the bird? Monkey, squirrel and bird कहाँ चढ़ रहे हैं? किसके ऊपर चढ़ रहे हैं? कोकोनट ट्री के ऊपर. अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि बनाना किसे पहले मिलेगा? द आंसर इज नो वन. किसी को भी नहीं मिलेगा. वाई? बिकॉज दे आर रेसिंग टू द टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री. है ना? वो कोकोनट ट्री पे चढ़ रहे तो उन्हें बनाना कैसे मिलेगा? सो द आंसर इज नो वन. ओके? नो वन. Clear students? I hope you understood this lesson. Now let us move on to our next lesson. Lesson number 11. Spot them. Okay. So what are we supposed to do now? We need to identify the spots. ये spots कौन से animal के हैं हमें ये identify करना है. Okay students? Okay. So the first one किसका spot है? Zebra. Answer is zebra. Okay. What is the answer? Zebra. Okay. Now the second one. The second one is leopard. What is the answer? The second one is leopard. Okay. The third one. This is, what is this? This is snake. Okay. Snake. Okay. Fourth is crocodile. Fourth one is crocodile. Okay. Fifth is giraffe. The fifth one is giraffe. The sixth is tiger. The sixth is tiger. Seventh is elephant. The seventh is elephant. Eighth is turtle. The eighth is turtle. The ninth one is deer. The ninth one is deer. And the last is, the 10th one is peacock. The 10th one is peacock. Once again, let us repeat. Okay. So, these are the patterns on the skin of the animal. So, the first one is zebra. The second one is leopard. Third is snake. Fourth is crocodile. Fifth is giraffe. Sixth is tiger. Seventh is elephant. Eighth is turtle. Ninth is deer. And the 10th one is peacock. Okay, I hope students you understood the lesson. Please go through the video and try to answer it on your own. Thank you.